Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Please have a seat. Thank you, sir. Yeah, please tell us about yourself. Yes, sir. So my name is Prajwal Gaikwad. I hail from Gadchiroli district. I did my schooling till 10th standard from Gadchiroli itself. After that, I moved to 11th and 12th in Nagpur. After that, I did my graduation in engineering physics, BTech from IIT Madras. After that, I worked in an IT company for almost a year. I resigned last year, and since then, I am preparing for the sector. Okay. Tell us about your family background. Sir, my family includes my father, my mother, and my younger brother. My father, he is currently working in a government sector. He is an extension officer in agriculture field. He is my idol, I would say. Very supportive father. After that, my mother, loving lady, and she takes care of us, and she is also my motivation and support. Then my younger brother, he is also very supportive and also looks up to me, always encourages me in all my endeavors. So he is currently pursuing BSc Agriculture from Urban. Okay, sir. Sir, you have completed your graduation in BTech. Which was your favorite subjects in your graduation? Graduation, I would say, so one of it is quantum mechanics. Then I would say a very unique subject was there, which was called happiness. So these are some of the. So, how would you relate your favorite subject to banking sector, central bank, and what will be the benefit of your subject for Yes. central bank? Yes, sir. Sir, particularly to the subject or like my background in general? Yeah, but your In favorite general, subject. your whole education, how it is correlated with this banking sector. Yes, sir. Yes, sir. That's what sir is going to ask. Yes, I understand. So, sir, given my background in engineering as well as my work experience as a software engineer, and looking at the technological penetration in financial sector as well as its growing importance, moreover, payment and digitalization, and also its need and the risk that is involved because of AI adoption, I feel like my background can be pretty useful as a manager. So I would say these are some reasons. Okay. So, what factors, what parameters are there in your life or in your throughout your education or throughout your life experiences? What parameters are there which guided you to join this RBI? Right, sir. So first and foremost, because my father is also in government service, so I had this natural inclination towards public sector job. And while I was in my graduation and I was looking for different opportunities, like what exactly I should choose for, I realized that RBI is one such institution which is known for its integrity. Moreover, it plays a very prominent role in the economy in maintaining macroeconomic and financial stability. Furthermore, just I had mentioned before, given my background, I thought that it is something where I could contribute meaningfully. So that is the reason, these are the factors which influenced my decision primarily. Okay. So, what is your strengths? What are your strengths and what is your weakness? So, strength, I would say I am a very calm person. This is a quality which I derived from my father actually. Second, I would say I am a very disciplined person. Whenever I have decided for a goal, I would pursue it with all discipline and my might. Third, I would say I am a very curious person. I am always ready to learn something new, and I try for different aspects and different subjects. So these are my strengths
coming to my weakness, I would say I'm little reserved person like in new environment. So furthermore, like some of my friends say that I am overly analytical sometimes in my decisions. So these are Are you working on your weakness? yes, sir. I am trying to. I mean, So being analytical is good thing. being analytical is good thing, sir. But sometimes being over analytical can cost you your time and energy. It So can delay your decisions. yes, So ultimately, it leads to failure. No Right. decision means failure. right, sir. Yeah. So, what is your next 5 to 10 years goal? Next 5 to 10 years, Goal, right, sir. ultimate goal. In 5 to 10 years, what do you want to achieve in your life? So I want to make some significant contribution, just like I said, in particularly in public sector itself. So if I get selected in RBI, and I would execute my responsibilities to the best of my ability. But if I get, let's say, in a particular domain, so I would try to increase and improve my skills in that particular direction, and I would execute all the responsibilities what I can. Okay, you are somewhat very interested to work in banking sector. So, Master Prajwal, Yes, sir. so question is that how would you handle any disagreement with your senior? If you have any conflict with your superior, Yes, sir. senior, then how will you handle it? Right, sir. Yeah? So- What qualities are required to handle such a situation? So I would say empathy is one quality that is required whenever we are in a conflict, whether it be senior or any friend or any family member. We generally do not try to think from the other person's perspective. So I would try to empathize with the situation. I would like to communicate with him, which is generally difficult and people try to avoid it. So I would try to communicate with him. I would try to empathize. I would try to understand his perspective, and then I would balance out and I would seek a proper negotiation or consolidation of the matter that could happen. Good. Tell us about your the place you belong to. Sir, I am from Gadcholi city actually. So, three things that I would like to tell you about it. So, first and foremost, it is Gadcholi is also known as the lungs of Maharashtra because it is covered with dense forest. 70 to 80% of the forest geographical area is covered with forest. So, second thing is it is also known for its mineral reserves, and there are also plans of government to build one of the biggest, not just in India, but one of the biggest steel plant in the world. The third, I would say, is the tribal people. 40% of the population of Gadcholi consists of tribal people. So this three things, I would say, is something unique to Gadcholi. Gotcha. So, Master Prajwal, Yes. so do you have any your role model, any specific? Yes, Who is sir. your role model? And what specific qualities have you imbibed from that person? Right, sir. So I would say my role model is primarily my mother. So because the first quality I would say her is resilience that she had. My father is posted in a remote area, so he generally does not stay with us for most of the week. He only come on weekend. So my mother actually brought us and supported us and executed the responsibilities of a mother herself. My father was also very supportive, but because of his posting, he was not able to contribute as much. But my mother did not falter in that situation itself, and she supported us since our childhood. And whatever
problems she faced and sacrifices she made for her career. So I think that is something I look forward to, and it is very commendable. Then tell us about the difference between the supervisory and regulatory function of RBI. Right, sir. So if we talk in layman terms, it's primarily regulation is like creation of rules. We are making sure we are creating rules and the framework through which banks can function. Supervision is making sure that the rules that are created are followed. So that is the primary difference between the two. Do you have any idea about the role of RBI Grade B officer? Sir, primarily, I mean, I know only about supervision department because they go into bank for on-site supervision. So for that, they need to check the record, the balance sheet, and all the systems are according to the regulation. So I primarily know about that. Furthermore, second is about financial inclusion and development. Sometimes officers are required to get to the field and talk to the people on the field in order to understand the situation better. So these are some of the things that I know. Other than I think it is mostly about regulation and making sure the rules are followed. So I'm not sure very well about all the functions, exact functions. Okay. So after reading your whole education background, Yes, sir. I want to ask why should we select it? Right, sir. Sir, What are the reasons to get selected? Do you think while analyzing your personality? right, sir. Right, sir. So first thing I would say is I'm on the younger side of the age spectrum. So that could be a positive side, which would give me an opportunity to work for a longer period of time in the institution as compared to other aspirants. Furthermore, sir, as I said before, I'm a very disciplined person and I'm very passionate about whatever I do. So moreover, RBI is a learning organization. And as I said, I'm a very curious person. I always strive to get better and gain more knowledge. So I think this quality is something that makes me a good fit for RBI. What are the key challenges facing by Indian economy? So first and foremost, I would like to say the geopolitical tension. Second is trade tariffs and the resolution that happened recently. And third thing is, I would say rupee depreciation that Indian economy is facing, because of which there is also increase in current account deficit. So I think, sir, these three primary reasons are there. Yes, factors are there. Do you think this answer is more excellent, best, average, or bad? What do you think about your answer? I think it is more of an average answer. More of an average answer. So what kind of improvement? What way you will improve this answer? So maybe In I would. future, what do you think? What you should do to modify this answer? Sir, I would say I should be more inclusive. I focus more on external factors, and I did not talk about the internal problems that Indian economy is facing. So I did not balance it completely. I think so. So I think I would like to take a more balanced approach and inclusive approach in my answer next time. Rajal, Yes, you are well educated, and why don't you try for UPSC? right, sir. I have thought about it, but I feel, sir, my temperament is more suited to be an RBI officer. I have given it exclusive thought to it. I have talked with my parents. I have talked with my friends.
and also my interest. So altogether, I feel RBI could be a better place for me as compared to UPS. Prajwal, you mentioned in your feedback form your hobby of chess and also skating. Pencil sketching, sir. Yeah, sketching, pencil sketching. So, do you know about chess and who is the youngest chess player of India? The youngest chess player, I am not sure, sir. But youngest world champion, World champion. Yeah. yes, Gukesh, Gukesh Domnaraju. He is from India. He achieved being world champion at the youngest age in history, at the age of 18. So, So, also Kushwaha, his age is 3 years and 7 months. He is the world's and India's and the world's youngest chess player. yes, I have seen him in news, I think. 1600 rated player. Yes, sir, I have seen that. So, how to differentiate between private and public sector bank? Right, sir. First and foremost, sir, public sector bank, I would say they prioritize more on social equity rather than profits. On the other hand, if we look at private sector banks, so their primary motivation is to make profits. They may not cater or they are not obliged or feel obligated to cater to the needs of underserved sections of our society. Sir, second is also I would say that government ownership, which is obvious. Um, yes, sir. Third, I would say, sir, they are making more profits as compared to public sector banks. Moreover, I feel the technological adoption among uh, private sector banks are better compared to public sector banks. So, Okay. Okay. Is inflation good or bad for Indian economy? so inflation can be good, can be bad, depending on the situation. So we follow inflation targeting and a target of 4% with a tolerance band of plus minus 2%. If inflation gets out of this bound, let's say more than 6%, so it could erode the purchasing power of common people. Moreover, there are many common people, poor people in our country. So it could act as a regressive tax for many people, and eventually it could reduce demand. On the other hand, if I would say inflation getting less than 2% or on the lower end, that could cause deflationary pressure, sir. So deflationary pressure, economic stagnation because demand would decrease, production would be less. So that is the reason why we target at 4% and we keep a tolerance band of plus minus 2%. In some of the social stigma and Indian mentality, Right. what are your opinion about the new culture of feminism? So I did not understand new culture of feminism. Means the ongoing culture of feminism, in current Right, situation, sir. Right, sir. the opinion of this feminist. What are your opinion about it? Sir. I would say feminism is very important, and I am a supporter. I am a feminist myself, I would say. So, feminism ensures that there is equity between males and females. Throughout history, we have seen that there has been denial of rights for women. But now we see that more women are getting into a workforce. They are also fighting for their rights. They are talking for their rights. There are many activists who are working in this direction. So I think this is a positive direction. But at the same time, there may be some people or there may be some misinterpreters that may suggest that feminism is women being better than men, which is not completely true. It is more about
we both have our own roles to play in a society, and we should get equal opportunity um, to execute what we want to. So, or develop our sorry, sir, I'm not particular. Okay. No problem. Yes. No problem. What ways are there you will suggest to any selected officer Right, to sir. handle politics at working atmosphere? So, politics is, as far as I know, in Politics RBI. means employee politics. Okay, okay. So being Many times seniors misbehaves, right, sir, right, sir. they bully. That kind of atmosphere. In that atmosphere, what ways you will suggest to any officer? Right, sir. So, being a corporate employee myself, I feel that many of the times it is just about communication gap. Many of the times the other person may think it is a part of a joke, but the other person may not take it in that way. He or she may take it personally. So, I think the first thing you can do is talk to your seniors. Um, try to get to know them on a personal note. So it has actually happened with me. I would like to share an incident, if you may, for me. Should I? Yeah, no problem. So, like in the initial phase of my career, um, there was this senior who used to even make his work upon us, upon the juniors who are newly selected. And many of the newly selected candidates felt that this is improper, that you should execute your own duties. So then when we talked to him, I personally talked to him, and then he said that you are correct, and I am doing it intentionally. I was shocked. Then I asked him, why are you not executing your responsibilities yourself? Then he said that in the initial phase, learning is most important, especially in the IT sector where the changes are rapid. And that is the reason why he was particularly making us to do even his work itself. Then we realized and we all appreciated his effort actually. So it cleared the misunderstanding between us two. So this way, I think we can clear things. Okay. You think this miscommunication is the reason? Miscommunication is one of the reasons, sir. Even ego, hatred of Right, sir. Everyone thinks that from his own perspective, just like I mentioned. Many of the times I feel empathy is lacking. We do not try to think from other person's perspective. So, as we say in Hindi, that नफरत को प्यार से ही काटा जा सकता है. Yeah, Right. that is good. Man. Yeah. So, so I feel the same. So I think we should also work with this direction and this attitude only. How will you analyze? Monetary policy committee? What work they are doing? Right, sir. So the decisions that taken by them. Or What decisions they are taking? sorry, sir. I mean, I did not completely get you. Monetary policy committee. Yes. What they are doing these days? How will you analyze their working culture and their working committee? Right, sir. What decisions they are taking? Right, sir. So first thing I would like to say, like, maybe I'm not competent enough to comment on them, but whatever as per my limited knowledge, I would say that currently monetary policy committee's statement is neutral, neutral monetary policy stance, and as suggested by our honorable RBI governor, that we are in a Goldilocks period, that is stable inflation as well as good economic growth. Moreover, sir,
we have recently made deal with EU or US. So I feel that yes, we are taking our economy in the right direction, and we have a bright future, sir. Master Prajwal, you Right, must have heard nowadays uh, the public reaction, controversial reaction against right, sir. RBI. Right, sir. In how would you handle this negative public reaction to a controversial RBI policy decision? Right, sir. On an individual level, the officer may not take any particular action. But if we see at the governor level or a deputy governor level, they generally come to public and make official statements. And moreover, they use forward guidance as a unconventional monetary policy tool in order to anchor the expectations of the market. So, sir, although there are rumors, there may be negative sentiments, but still RBI works in a particular direction and they always keep things on a positive note in order to reduce the volatility. So, Master Prajwal, so you, I think that you must use social media also. Sir, Social media. Do you use social media platform? And if you use social media platform, then which social media platform you use? And do you mention that the pros and cons of that social media on right, society? right, sir. Sir, I primarily do not use social media. I mean, I have a account, but I don't really use it actually. So I am on YouTube most of the time. So if it can be called a social media, Yeah, it is the social media. right, sir. So coming to pros and cons, first and foremost, technology has made us connected to the at a wider scale. Even if I want to make friends, someone in New York, I am capable of doing that. Moreover, it gives me opportunity to talk to my near ones, even if I am away from them. So second is that it gives you a platform to speak. So it gives you a platform to express your opinion. And we have seen that through Twitter or even certain trends that occur on social media. So it also shows you the sentiments or the problems at a root level in our economy or as a society. On the negative side, sir, I would say there is problem of misinformation and disinformation. Sometimes, although it gives you access to various information, but it also has this consequence that we are not able to distinguish between the correct and the wrong one. And second thing is that, just like I said, there can be a spread of rumors, misuse of information. There can be cyberbullying. Furthermore, sir, as we are diving, as there is penetration of technology and use of AI, we have seen the rising cases of deepfake, where people share their images and those have been misused by people by making fake videos or fake images and circulating them online. And we do not have any countermeasure for it currently. Moreover, government is not completely controlling it. Furthermore, most of the social media that we have is not Indian. They are actually foreign companies. So data is very important today, and many of our data is actually getting fed by the US companies. So it can decrease the sovereignty of data. So these are some things I would say. What do you think about AI as an engineer? Right, sir. AI has certainly impacted our lives at a many level. Now, for example, I myself use AI to learn Spanish. I'm learning Spanish. So yes, as an engineer also, it had made life easier, work easier. But yes, sir. So there are some negative aspects of it too. So just like I said, that data is very important today.
and we do not have our own AI model currently. So the data that we feed is actually used by the American companies or some other countries' companies. Moreover, sir, sometimes AI is hallucinating. What I want to say is AI does not completely give correct information all the time. Sometimes it may give wrong information as well. So, furthermore, sir, there is growing dependency on AI for our daily tasks. For example, students may use essays and all to write AI. So, somewhere this is impacting on a larger scale at a society level. So yes, we need to balance both this perspective. As a tool, it can be really advantageous for our country. Prajwal, there is a recent news. I think that the day before a day, a scientist he stated that AI has criticized that human resources, human beings, they are useless. They are becoming useless. Directly, AI it itself criticize on human beings. Right, sir. Starting means they are starting to replace all human beings in various sectors, robotism and AI itself it is using its agents also. Right, sir. Automation is certainly one factor of AI, and it is happening at a larger scale. Most of the companies are adopting AI technologies and replacing their employees. That is true, sir. But many of the reasons or many of the comments that AI make is actually dependent on the data that is fed into the model. feedbacks. Right, sir. Various feedbacks. Right. Okay, leave it then. We will. I would like to ask you a very important question. That is, recently, Government of India tried to implement UGC bill to protect the interest, to protect the lower caste people from inhuman treatment given by other people on social media or other things. You know that thing. Okay. So, but some people protested, some organization protested against it, and then it got stopped by Supreme Court from being implemented. Right, sir. But so tell me any 4 reasons why it should be implemented and some reasons why it should not be implemented. Sorry, but UGC bill I am talking about. I'm not aware of it. I will need to read about it. So sorry. Okay. You don't have idea about it? Sorry, sir. I'll need to read about it. I'm not sure currently. So it is going on. Okay. Okay. No That's problem. current issue. So Sorry, sir. I'll read it. next thing I would like to ask you about the budget, recent budget. That too, I need to read, sir. I'm sorry. You are not economic survey. So I was Key points of economic survey. sorry, sir. Okay, no problem. Yeah. So we will go back to your education background. Right, Okay. sir. So while doing your graduation, Right, sir. what do you feel? Why don't you join in that science background field? Right. Why it was being pushing towards this RBI or banking sector? Why it is like that? Right, sir. So I chose engineering primarily not because of my own reasons, sir. Generally, it's a trend in India that if you are scoring good in your 10th, either choose a doctor or become an engineer. So I was a little interested in maths, so I chose engineering. I chose the field that was available to me according to my marks. But after getting into college, I had so much of free time for myself and to reflect on my life, what I actually want to do. Moreover, at that point, you reach a certain maturity level to take a particular decision. So when I reflected and I thought about it, I realized that, okay, I want to get into public sector. So I chose
something that was aligned with my interest also. Then I thought, okay, I will go for RBI. For how many years you have been preparing for RBI exam? So this is my first attempt. 1 year. 1 year. If we don't select you this time, then what will you do? Right. So if I'm not selected this time, I would probably take a job, and I will prepare alongside for RBI itself, and I will appear for this exam again next year. Do you have any idea about the hierarchy in RBI? Right, sir. The hierarchy of officers and this governor like that. Right, So, do you have any idea about it? Yes, sir. Yes. Sir. First and foremost, at the top level is a governor. Then there are 4 deputy governors. Then there are executive directors. Below that, there are principal chief managers. Then there are chief managers. Then there are general managers, deputy general manager, assistant general manager, manager, assistant manager, assistants, and other staff members. Okay. So What is your opinion about this? Recently, there are mergers of banking sector. So many Right, banks are getting merged into Right, sir. a big bank. So, do you think it is good or good for economy or is for the betterment of the society? Right, sir. So RBI's stance is generally that we do not want to liquidate the banks. We would like to cater to the needs of people, and banking industry works on the trust. So we are trying to, by RBI's perspective, RBI is trying to actually decrease the NPAs or increase the efficiency or whatever drawbacks are there. So that is the reason why I feel RBI and government is taking this step into the merger. So I think primarily I would say it's a good decision. But practically, what you know what is going on after merger. So many banks merged into Bank of Baroda. Okay, so Bank of Baroda there is one particular place, Navsari. Okay. Navsari, it is in Gujarat. Okay. Okay. So what happened recently when I went to that place, I found that around 72 branches Bank of Baroda is having at one place within a very limited area. Right, sir. In that place, around 72 branches are there. So, will it serve the purpose? You are A completely merger, if you are not closing branches, you are Right. concentrating, you don't want to liquidate them, but you are changing just name of that bank. Otherwise, the same bank, same place, Right, sir. changing boards. Right, sir. But sir, I agree with your statement, sir, that branches being at the same place. But sir, it is not just a physical change, or I would say the change of a name. It also comes with a technological advancement, your governance structure, your opinion, your management structure. So I feel at the surface level, it may feel like that it is insufficient or it is not required. But at the deeper level, I feel that things can get better with mergers. Yeah. So, then I would like to ask you the question about your parent. Right, sir. What particular characteristics you observe in them that you want to follow in your whole lifetime? Right. Lifetime. Right, sir. So, talking about my father, just like I had mentioned before also, sir, he's a very calm person. And even in distress or even in problematic situation, people may lose their temper or people may become angry, emotional.
But my father is so calm and composed even in those situations. I feel, I mean, this is something that everyone should adopt in their life or should have a skill of. And that is something I really admire in him. Coming to my mother, so just like I said, she is really resilient and she is always happy about it. She does not show the pain on her face despite all the sacrifices she had made for us. So that quality of selflessness and resilience, I would say I would like to inculcate in myself. Yeah. So, sir, it is one of the very good interview. Good. So thank you very much. You can, Thank you so much. Thank you. yeah, please have a seat. Come back. So there are certain points we would like to analyze your interview. ठीक है. So जो हुआ है उसके बारे में बात करते हैं. कैसे हुआ प्रज्वल कि कुछ पॉइंट्स है कि आपको उनमें बस बेहतरी की अपेक्षा है कि आप उसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे. Right. अभी आज ही पहला पड़ाव है, आप समझिए. ये सब आपका जो भी इंटरव्यू अभी हम लोग पूरा पिक्चराइज कर रहे हैं, ठीक है. तो इसको आपको देखना है और उसमें चेंजेस लाने हैं. जैसे चेंजेस, पहला तो चीज है हैंड जेस्चर बिल्कुल नहीं है पूरे इंटरव्यू. वो मेरे को बताया गया था कि सर आप कहाँ से आपको बताया गया? अगर वो यूट्यूब से है तो शायद उन्होंने कभी इंटरव्यू नहीं दिए हैं. आप समझिए. आप किसी को भी अगर बैंक में लेना चाहते हैं, कहीं भी आप आपकी पोजीशन पे, आप समझिए कि आप कन्विंसिंग एबिलिटी कब आती है? जब आपका बॉडी लैंग्वेज उसको सपोर्ट कर रहा है. राइट सर. तो जैसे फीट है, आपके पैर है, वो नहीं हिलने चाहिए, लेकिन आपके हाथ तो कम से कम, देखिए किसी लीडर जैसे इस पोजीशन पे नहीं जाना चाहिए, बट आप बिल्कुल भी हाथ नहीं हिला रहे. अभी ये देखिए पोजीशन है, ऐसे है, अलग है. तो ये अलग अलग एंगल में आप इतना लेवल पे आप हाथ बिल्कुल हिला सकते हैं. हैंड जेस्चर आर वेरी इंपॉर्टेंट. वो क्या करते हैं? आपके हर पॉइंट को सपोर्ट करते हैं. आप समझिए. Right, आप जो कुछ भी बताना चाहते हैं उस चीज को सपोर्टिव एंगल देते हैं. Right. Only in case of IB interview, it is expected that you should not use hand gesture. Okay. इंटेलिजेंस ब्यूरो के इंटरव्यू में हम बच्चों को बताते हैं कि उसमें आप हाथ मत हिलाइए, लेकिन इसमें आपने बिल्कुल आपका बॉडी लैंग्वेज आपने मेंशन करना है. आपका स्माइल आना चाहिए, आपका ये सब हैंड जेस्चर आना चाहिए. आंसर्स वर गुड, बट हैंड जेस्चर में एकदम 0 मार्क आ गया. आप समझिए. अगर आपने किसी यूट्यूब चैनल से लिया है, ऐसा ही होता है मेरे ख्याल से, तो वो उन्होंने जिंदगी में इंटरव्यू नहीं दिए. समझिए. जैसे कि हम लोगों ने आज तक जितने भी हमारे पास से RBI ग्रेड बी में लोग लगे हैं या कहीं भी हुआ है, 15 साल हो गए इस फील्ड में. उसके पहले 10 साल बैंक में खुद काम किया है. तो आप समझिए 25 साल में इतना तो जाना है कि क्या रिक्वायर्ड है क्या नहीं है. आप समझिए. ठीक है ना. मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज को बराबर फॉलो करेंगे कि आप एंड जस्ट, अभी देखिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप बहुत ऊपर ले, इतना आप सिंपली, तो वो नेचुरली रहता है मेरा, लेकिन मैंने जानबूझ के रेस्ट्रिक्ट किया. मैंने देखा आपने उसे रेस्ट्रिक्ट किया, इसलिए मैंने उसे पॉइंट आउट किया. आप समझे. फिर हम आगे बढ़ते. आई कांटेक्ट वाज वेरी गुड इन योर केस. बहुत ही अच्छा था आई कांटेक्ट. उस बारे में रियली अप्रिशिएट. देन जो एक पॉज नीडेड था. आप समझिए क्या होता है कि आप उस चीज को ना कैसे ले रहे थे. इट वाज नॉट ह्यूमन बेस्ड इंटरव्यू नहीं चल रहा था. मशीन जैसा हो गया था कि हम सवाल पूछते थे, आप आंसर दे रहे थे, सवाल पूछते थे, आंसर देते थे. ऐसा नहीं करना है. Okay. आप उनका ये समझिए कि जो लोग आगे बैठे हुए हैं वो एक एज उन्होंने एक कमाया हुआ है, एक उनका एक्सपीरियंस है, एज रिलेटेड एक्सपीरियंस है, उसके साथ एक ईगो भी है. आप समझिए. तो उनके ईगो को आप चैलेंज कर रहे हैं कि एक छोटा सा बच्चा अभी आया है इस मैदान में और RBI के इतने बड़े ऑफिसर को चैलेंज कर लाइक दैट. आप समझिए. अगर आप समझिए जो भी लोग वहां बैठे उसमें से कोई अगर उस चीज को निगेटिवली लेता है तो आपके अगेंस्ट जाते हैं वो चीज. तो आपने क्या करना चाहिए? कुछ सवाल पूछने के बाद, जैसे कि जो आपसे रिलेटेड ना हो. देखिए आपका HR रिलेटेड क्वेश्चन को आप डायरेक्ट आंसर दीजिए, लेकिन अगर आप बिना एनालाइज किए, आपने बोला आपका वीकनेस क्या है, आप बहुत ही ओवर एनालिटिकल है, वो लिटरली लग ही नहीं रहा था. आपका वीकनेस ओवर एनालिटिकल है, आप बिना एनालिसिस किए हुए आप फटाफट आंसर दे रहे थे. हाउ कैन इट बी पॉसिबल? तो आप गलत झूठ बोल रहे थे. आपको समझ में आ रहा है क्या? Okay. आप बोल रहे थे कि सर आप मैं ओवर एनालिटिकल हूँ, लोग मुझे उस बात के लिए, मेरे दोस्त भी बोलते हैं, और आप कहीं भी एनालिसिस किए बिना फटाफट आंसर दे रहे थे. ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी. वो सही पता था इसलिए, मतलब हाँ नहीं ऐसा नहीं होता है. फिर भी आपने एक पॉज लेना है,
आपने एनालाइज करना है, कुछ क्वेश्चन को आपने टाइम भी लेना है, ठीक है ना। हाँ ठीक है। इवन वो यूजीसी के वक्त अगर आपने बोल दिया होता कि सर क्या मैं थोड़ा सोचने के लिए टाइम ले सकता हूँ, मैं देता था टाइम, हम लोग देते थे, और आप बाद में मना कर सकते थे, सर मैं नहीं कंस्ट्रक्ट कर पा रहा हूँ, क्या इसे मैं पास कर सकता हूँ, ऐसा आप बोल सकते थे। आपको समझ, आपने सीधा पट से बोला नहीं, नहीं, डोंट। अभी आप देखिए आगे बढ़ते हैं तो ये पॉज आप भूलना नहीं सर, बिल्कुल। Yes, sir. देन द प्लेस बिलोंग टू, मॉडिफाई दैट आंसर। आपने तीन चीजें मैं बताता हूँ मेरी जगह के बारे में, यहाँ से शुरुआत की थी और 3 चीजें बताना चालू की। क्यों काउंट कर रहे हैं आप उसको? Okay. वो आप समझिए, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, वो आपके जीवन से रिलेटेड है। हम अपने जीवन के बारे में, हम जिस चीज में रहते, जहां से आए हुए हैं, ठीक है ना, अपने माँ बाप, अपना गांव, इसके बारे में हम अनगिनत चीजें बोल सकते हैं। उसे काउंट नहीं करना है, उसे नहीं बोलना है कि मैं 3 चीजें, उसे आप बोलते जाइए। एक सुंदर स्पीच हो सकता है। आप देखिए गढ़चिरौली बोला तो ग्रीनरी है, ये जब मैं शहर जाता हूँ तो मुझे याद आती है मेरे गांव की, क्योंकि वैसे ग्रीन, वैसी नदियां कहीं नहीं है, जो वहां का एटमॉस्फेयर है, वहां का ऑक्सीजन है, वो कहीं नहीं है। राइट सर। आज आपने ऑक्सीजन के बारे में बोला? हाँ। नहीं बोला, मतलब लंग्स ऑफ महाराष्ट्र बोला। हाँ, लंग्स ऑफ महाराष्ट्र, आप समझ में आ रहा है ना। हाँ। तो आपको उसको, आप उसे गिनकर मत बताइए प्लीज, ठीक है ना। आप उसको बहुत अच्छा आंसर बनाइए, गारंटी से आपके प्लेस के ऊपर आपको सवाल आएगा। क्यों? क्योंकि आप यूनिक हो, आप समझे, उस प्लेस से कोई गया है कि इतनी पोजीशन तक आरबीआई ग्रेड भी होगा, कोई गांव में दूर दूर तक पत्ता मार के देखो, किसी को नहीं लगेगा कि जो आरबीआई या कहीं टच भी कर पाया। आप समझे चीजों को, तो आपको ये यूनिक सवाल आपके पास रहेगा ही रहेगा कि आप इस प्लेस के बारे में बताइए जहां से आप आते हैं। Okay, आपको उसको कितना अच्छा इंप्रूव करना है, यूनिवर्सिटीज क्या क्या है वो बताना है, वहाँ एजुकेशन किस तरह से चल रहा है, लोगों का मिसकंसेप्शन कितना बढ़ गया उस प्लेस के बारे में। आज भी लोग सोचते हैं कि गढ़चिरौली में तो कोई रह नहीं सकता, ऐसा नहीं है। अगर आप जाएंगे तो मेरे ख्याल से 60-70% पॉपुलेशन ये सरकारी नौकरी वाले लोग हैं, बराबर। आपके गांव में जितने होटल है उतने शायद ही बड़ी सिटी में नहीं होंगे, इतने अच्छे अच्छे होटल है। बीच में प्रेसिडेंट आके गए हैं, बराबर। प्रेसिडेंट ने बहुत सारा पैसा दिया है उस यूनिवर्सिटी के लिए। आप बोलिए ना, क्या नहीं है बोलने के लिए उस गांव में। मैं आप आपके गांव से, मैं आपके गांव से नहीं है, उसके बावजूद मैं आपके गांव के बारे में कम से कम 50 सेंटेंस बोल सकता हूँ सर, आप नहीं बोल पाए। सर वो मतलब मुझे लगा कि रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। ना, बिल्कुल नहीं रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, आप समझिए, ठीक है ना। जब हमने आपको चांस दिया, कम से कम 2-2.5 मिनट तो बात करना चाहिए उस मामले में। प्रिपेयर दैट क्वेश्चन लाइक दैट, ठीक है ना। आप समझिए कि आपने अगर 12 से 15 सेंटेंस अपने गांव के ऊपर बोल दिए तो हम तो खुश हो गए। हमारे नॉलेज में आप क्या बढ़ोतरी, देखिए हम शायद, हमारा पैनल ना यूजीसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, ढेर सारी चीजें हम जानते, क्या आपके गांव के बारे में जानते? नहीं जानते उतना। आपने हमें यूनिक कुछ चीजें आपके गांव के बारे में बतानी। क्या आपको लगता है पैनल में किसी को गोंडवाना यूनिवर्सिटी पता होगी? नहीं पता होगी। हाँ, वहां किस तरह से मॉडिफिकेशन गवर्नमेंट कर रही पता होगा? नहीं पता होगा। गॉट माय पॉइंट। वहां के जो पालक मंत्री है वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे चल रहा है, ये सब चीजें बोलिए। कितने सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कौन से नए कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं, सब बोलिए, ठीक है ना। हाँ, देन फिर वो पॉलिटिक्स के बारे में बहुत अच्छा आंसर दिया था, जॉब पॉलिटिक्स के बारे में, बट फेमिनिज्म के बारे में आंसर सही नहीं था। सही नहीं था मींस उतना ये नहीं था, क्लेवर अप्रोच नहीं था उसका। ओके, सही है। हाँ, आप उसे बैलेंस कीजिए, क्योंकि आप मेल कैंडिडेट हैं। कुछ अभी वो सवाल इसलिए पूछा गया कि फेमिनिस्ट क्या करते हैं, वो लेडीज के साथ अगर अन्याय हो जाए तो इमीडिएटली तैयार हो जाते हैं, लेकिन जेंट्स के साथ अन्याय होने के बाद बिल्कुल चुप रहते हैं। तो वो जो बैलेंस होना चाहिए सोसाइटी में, वो नहीं कायम हो पा रहा है, उस बारे में अपनी बात करनी चाहिए। सही है ना। हाँ, ओके। देन अ गुड वे यू हैंडल द कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। 1-2 आंसर क्वेश्चन आपके बहुत ही सही थे, कंट्रोवर्सी रिलेटेड एक क्वेश्चन सर ने पूछा था, बहुत ही अच्छा दिया उसका आंसर। सही है, इट्स एब्सोल्युटली राइट वन, ठीक है वो। और बाद में जैसे यूजीसी बिल बिल्कुल नहीं है, क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है? पढ़ा नहीं है मैंने। नहीं, अभी रिसेंट में तो कितनी सारी चीजें चल रही है यूजीसी के बिल के बारे में, ठीक है। उसके ऊपर पता कीजिए क्या है, पूरा स्पीच दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट अभी जिस तरह से उस पर बारे में बात कर रही थी। देन बजट तो हो गया ना, बजट के की पॉइंट्स ही बता रहे थे। वो एक्चुअली मैंने अभी ज्यादा प्रिपरेशन किया नहीं, मतलब आप विनर इंस्टीट्यूट का जो अभी YouTube चैनल है ना, उसी के ऊपर आपको एक अराउंड 2.5 आवर का पूरा एक ये दिख जाएगा,
ओके हाँ, पूरा एक वीडियो है, मैं आपको सेंड भी करता हूँ। ओके तो पूरा वीडियो 2.5 आवर का है, आप उसको पूरा बजट सेशन आप ले लीजिए, पूरा कंप्लीट कीजिए। देन इकोनॉमिक सर्वे भी आपको यूनिट हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, वो देख लीजिए पूरा कि क्या क्या की पॉइंट्स है। देखिए वो तो बहुत बड़ा है, उसमें से महत्वपूर्ण क्या मुद्दे है वो आप ले सकते हो उसमें से। ओके ये बेटा आप देखो, ये चीजें हैं ना, आपको स्पीच देने के लिए प्रेरित किया गया। जब आप देखो, मैं ये बोलता हूँ कि हाउ विल यू एनालाइज, तो आपको लिमिटेशन आ गई। लेकिन मैं आपको एक की पॉइंट दे दिया बजट के ऊपर, मैं बेसिकली आपको ये बोल रहा हूँ कि बात करो बेटा इस चीज पे, यूजीसी के बिल के ऊपर बात करो, जो पता है बोलो, ठीक है। बजट के बारे में जो पता है बोलिए, ठीक है। फिर इकोनॉमिक सर्वे इसलिए बोला गया है, कुछ पॉइंट्स आपको इंटरव्यू के दौरान जब आपको एनालाइज नहीं करने होते, एनालिसिस में आप क्या करते, आप थिंक करते उसके ऊपर, आप उसको बताते कि आपके ओपिनियन। यहाँ पे ओपिनियन कुछ नहीं है, इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन क्या होता है, इंफॉर्मेशन जितनी ज्यादा आप दे सको उतना सही है, राइट देन मेरे ख्याल से हायरार्की ऑफ द आरबीआई, दैट वाज गुड आंसर, नो प्रॉब्लम। सही है सर, हाँ बड़ा अच्छा था आंसर वो, और आपको पता था उसके बारे में, ठीक है ना। और ये भी जानकर लीजिए कि पहले आरबीआई ना थोड़े छोटे छोटे शहरों में भी हुआ करते थे। ओके उसका कुछ हिस्ट्री है तो आप पता कीजिए, आपकी तरफ था क्या कभी आरबीआई, पता कीजिए। ओके हाँ, जैसे आप यहाँ से आप अभी गढ़चिरौली नहीं, लेकिन भंडारा डिस्ट्रिक्ट है ना महाराष्ट्र में, उसका एक छोटा सा गांव है साकोली, उस प्लेस में आरबीआई का ब्रांच हुआ करता था। हाँ, तो अभी तो वो मिस जैसे नरेंद्र यादव जो आरबीआई ऑफिसर थे, वो वहां पोस्टेड थे किसी जमाने में, इतना मिस हमने सुना है। तो ऐसा बहुत कुछ हो सकता है, तो आपके गांव के आसपास ऐसा कुछ कभी हुआ है क्या, क्या नहीं, वो सब पता कीजिए, ठीक है। आपको पता है आरबीआई नागपुर का क्या खासियत है, ये आरबीआई का जो नागपुर है उसका क्या खासियत है पता नहीं आपको? इंडिया में जितना भी गोल्ड रिजर्व है वो आरबीआई नागपुर में रखा हुआ है। इंडिया का जो गोल्ड रिजर्व है नागपुर ब्रांच में रखा हुआ है। Okay. आप विकिपीडिया पे पढ़ सकते हो उसके बारे में, क्योंकि आप इस प्लेस से हो, ठीक है ना, Right. नागपुर के आसपास ही आप वर्चुअली, तो दे विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट ब्रांच आल्सो, ओके। देन कॉन्फिडेंस गॉट लोअर डाउन एट द एंड फेज ऑफ द इंटरव्यू। आपका फ्लो ऐसा रहा, ऊपर ऊपर गया, और बाद में जैसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं आए, तो आपको मींस मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ सवालों के आंसर नहीं आते तो अगले सवालों पे उसका असर नहीं होने देना। वो सर एक्चुअली मैंने खाना नहीं खाया तो एनर्जी चली गई है मेरी। ना ये तो फिर अभी आपको तो वहां ऐसा दिखेगा कि दिन में सुबह ही बुला लेंगे वो आपको, और वो बिठा के रखेंगे और शाम को 4-5 बजे चालू करेंगे इंटरव्यू। इट इज लाइक दैट, आप समझे, ठीक है ना। वो बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है ना। मैंने ये पाया है आरबीआई के मामले में कि आरबीआई पहले भी स्टूडेंट्स ने हमें बताया है, जो लोग लगे हैं अभी 10-12 लोगों का ये ओपिनियन मैंने सुना है कि वो लोग जो बताया है, अभी आपके सीनियर भी जिन लोगों का लास्ट ईयर 2 साल में सिलेक्शन हुआ है, वो भी आपका इंटरव्यू लेंगे। तो वो लोग जब बताएंगे आपको तो यही बताएंगे आपको कि वो एकदम सुबह सुबह बुलाते हैं और दिन भर बिठाते, ऐसा नहीं कि खाना नहीं देते, बीच में खाना भी होता है, तो आपको ये सब मेंटेन करना है, ठीक है ना। देन मिस वही था कि आप एक बार आंसर नहीं दे पाए, उसके बाद आपका लोअर डाउन हो गया वो। मुझे नहीं लगता वो एनर्जी का कुछ कहानी था, आपका वो इफेक्ट होने लग गया बाकी क्वेश्चन आंसर। ओके ओके, वो मत होने दीजिए, ठीक है ना। इंडिविजुअली उसको हैंडल कीजिए। यू कांट आंसर एवरी क्वेश्चन, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट ऑब्जेक्टिव, इंटरव्यू इज सब्जेक्टिव। उसमें हर क्वेश्चन का आंसर भली भांति हर वक्त नहीं आ सकता है, इट विल टेक टाइम, ठीक है। और करंट टॉपिक को आप बिल्कुल स्टडी करो सर ने, जो जैसे कि यूजीसी बिल हो गया है ना, ये टॉपिक को बिल्कुल प्रिपेयर करो, वेल प्रिपेयर करो। राइट, मैंने मतलब किया है थोड़ा बहुत, बट मोस्टली वो जो हॉट टॉपिक्स है जैसे यूएस ग्रीनलैंड, यूएस वेनेजुएला, या टैरिफ या करेंसी डिप्रिसिएशन, पहले इंडिया पे आइए। हाँ वो इसलिए पहले इंडिया पे आइए, इंटरनेशनल अफेयर्स का अलग से सेशन करेंगे हम लोग। Okay. अभी आप देखिए, अभी आपका जो एक सेशन अभी ये लिया है हमने एचआर प्लस, हमने अभी अब जनरलाइजिंग इंटरव्यू हुआ है आपका, एचआर मोस्टली फोकस था इसमें। हम आगे आपका जो भी सेशन होगा वो किस पे होगा, आपका इंटरनेशनल अफेयर्स पे होगा, ठीक है ना। देन आपका मींस ये फाइनेंशियल टर्म्स, फाइनेंशियल ओपिनियंस उसके ऊपर होगा, जो इंडियन जो इकोनॉमी है, इंटरनेशनल इकोनॉमी का इफेक्ट है, ठीक है। उसमें टैरिफ से रिलेटेड सब क्वेश्चंस आएंगे, इवन टर्म्स आएंगे, ठीक है ना, जो आपके लिए यूनिक टर्म्स होंगे, जो आपको नहीं आता है, जो एक अनुभव से आपको पूछा जाएगा, ठीक है ना। देन
आप समझिए कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस कि ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे। जैसे सर ने एक जनरलाइज में पूछा था आपको एक दो सिचुएशन में, ठीक है ना। इवन मैंने पूछा था आपको कि जॉब पॉलिटिक्स पे आप क्या असर करेंगे, वो चीजें हुई थी, ठीक है ना। देन बाकी भी बहुत सारी चीजों में ऐसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। फिर एब्रप्ट क्वेश्चन होता है। एब्रप्ट क्वेश्चन बोला जो बिल्कुल हटके ही कुछ तो भी होता है, एक फ्लो चल रहा है उसके बीच में अलग क्वेश्चन पूछना, तो आप एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं यार इस चीज को कैसे एक। आज आपने आपका पूरा पर्सनालिटी में एक एंटी व्यू आ गया था, पता है। आपने पहला स्टार्टिंग के क्वेश्चन में आपने ओवर एनालिटिकल बोल के आप पूरे इंटरव्यू के दौरान कहीं भी हम आपको ओवर एनालिटिकल नहीं महसूस कर पाए। ओके। हाँ, तो पॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। हमें मैच्योर्ड पर्सन चाहिए। और उसमें भी आपने एक जगह ये बोल दिया कि मैं उम्र से वैसे भी छोटा हूं तो मैं हाँ, तो वैसा मत करिए। ओके। आप नहीं हो छोटे, ओके। तो एक रिक्वायर्ड एज में ही हो बराबर से। आपका अनुभव अच्छा है, आप जॉब करके आए हो, ठीक है ना। एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा, पीजी भी हुआ है ना? नहीं, पीजी नहीं हुआ है, ठीक है ना। लेकिन जॉब करके आए हो, बाकी सब चीजें हैं, तो डोंट उस चीज को मत ही करिए। तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, वो आंसर एकदम ही गलत हुआ। ओके। गलत नहीं हुआ बट वो एवरेज आंसर में चला गया। मैंने आपको पूछा था कि आपका थ्रू आउट लाइफ एक्सपीरियंस और जॉब मींस एजुकेशन बैकग्राउंड से आप इस जॉब के लिए कैसे सुटेबल, हम क्यों सिलेक्ट करें आपको, व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू, दैट वाज द क्वेश्चन, बराबर। क्या आंसर होना चाहिए? आंसर ऐसा होना चाहिए कि सर जो भी मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड, थ्रू आउट माई एजुकेशन बैकग्राउंड and life experiences, I acquired certain skills, qualities, attributes like patience. You got my point? Positive attitude, okay? Then leadership style, communication skill, coherence of thought, clarity of thought process. Got it? All these skills, I will try to implement them while working with the organization. Okay. And I would like to assure you that if you give me this opportunity, I will work very hard to add to the work culture of the organization. This is the way. आप आपके ग्रेजुएशन के दौरान आपके लाइफ एक्सपीरियंस से क्या क्या सीखते हैं, यही सब चीजें सीखते हैं। Right. हाँ, ऐसा आना चाहिए। अपने आपकी उम्र पे लिखी गई उस चीज को, पहला ही पॉइंट तो पहला ही पॉइंट इमेच्योरिटी शो कर रहा था। Okay. हाँ, हम आपको इसलिए सर ने सवाल क्या पूछा, आपको याद है? आपको सर ने सवाल पूछा इस साल अगर नहीं लिया तो आप आगे क्या करोगे, क्यों आया वो सवाल? अभी तो टाइम है आपके पास, आप अगले साल आ जाइए। जिनके पास टाइम नहीं उनको ले लेते हैं, जो मैच्योर्ड है। आपको समझ में आया? आपको समझा ही नहीं कि वो आपके अगेंस्ट जा रहा है, वो आपको समझ में आया? हाँ। सो एंगेज्ड ऑफिसर और इमेच्योर ऑफिसर की बजाय हम किसे लेंगे? एक्सपीरियंस को, जो हमें छोड़कर भी नहीं जाएगा। Okay. हाँ, वो जो हमें छोड़कर नहीं जाएगा, जिससे इस जॉब की बहुत ही जरूरत है, जो सच में मैच्योरिटी के साथ, एक्सपीरियंस के साथ इस पे काम करेगा। राइट सर। तो वो एक क्वेश्चन था कि मतलब यूपीएससी अपने यूपीएससी के लिए क्यों नहीं किया, तो वो क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है? कौन सा वाला, कौन सा क्वेश्चन? आपने यूपीएससी ट्राई क्यों नहीं किया? हाँ, यूपीएससी को ट्राई क्यों नहीं किया, ठीक है ना। सो आप देखिए इस चीज को आप किस तरह से ले सकते थे आंसर कि सर बेसिकली आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन फाइनेंसेस। हाँ, वेरी मच। यूपीएससी क्या है? यूपीएससी है कि जिसमें सभी सब्जेक्ट्स को महत्व प्राप्त हो जाता है। जीएस बोला तो बहुत वास्ट काम है, उसमें ज्योग्राफी बाकी सब सब्जेक्ट्स। मैं समझता हूँ कि मैं इन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट पाता हूँ, फाइनेंशियल टर्म्स, बाकी इंटरनेशनल अफेयर्स। ओके, जो आपका प्लस पॉइंट हो उसके बारे में बात कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है ना। ये प्लस पॉइंट ही होगा ना। आप देखिए जब आप धीरे धीरे प्रिपरेशन हो जाएगा तो इंटरनेशनल अफेयर्स हो गए, आपके फाइनेंशियल टर्म्स हो गए, जो इकोनॉमिक पॉलिसी, उसके बारे में आप ज्यादा अच्छी तरह से बात कर पाएंगे। हिस्ट्री एंड बाकी चीजों पे उतना आप नहीं फोकस कर पा रहे थे, तो यूपीएससी आपका मोटिव भी नहीं था और आप नहीं करना चाहते। ये सवाल आता है, क्यों आता है पता है क्या? बहुत सारे बच्चे आरबीआई को इसलिए प्रेफरेंस देते हैं कि उनका यूपीएससी नहीं हुआ है। अभी आपने दिया नहीं उत्तर, लेकिन कोई दूसरा होता ना तो वो ऐसा आंसर देने लग जाते कि सर मैं अभी तक प्रिपेयर कर ही रहा था, लास्ट ईयर मैंने। लोग इंप्रेशन मारने के चक्कर में अपना नुकसान कर बैठते हैं कि लास्ट ईयर मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया ही है लेकिन हुआ नहीं मेरा, तो मैं इधर आ गया।
So you, the people from RBI are my second preference. You got the point. Right. हाँ, जब आप सामने वाले को ये बता रहे हो कि भाई मैं पहले बड़ी चीज कर चुका हूँ लेकिन मैं हुआ नहीं, इधर मैं आ गया, उससे क्या हो जाता है, उस Negative. कैंडिडेट के अगेंस्ट जाती है वो बात, इसलिए आपको सवाल पूछा गया राइट. और आपने सही आंसर आपने किया ही नहीं है वो. हाँ, तो लेकिन उस चीज का सही आंसर एनालिटिकली, मैं आपको एक ही चीज समझा रहा हूँ, और एनालिटिकल हो, एटलीस्ट एनालिटिकल तो भी, और नहीं लेकिन कहीं तो भी एनालिसिस होना चाहिए. You got it? हाँ, yes. Anything else you want to ask? वो वीकनेस चेंज करके ये नहीं बिल्कुल भी नहीं, सही है वो अगेंस्ट नहीं जा रहा ना आपके, और एनालिटिकल होना अच्छी बात है. हाँ. ओके. तो बाकी सब तो मेन चीज ये थी कि सर मतलब कपड़े आपको थोड़ा सा कपड़ों के बारे में मैडम बता देंगे. मृदुल मैम आपको कपड़े बताएगी. ओके. कल मृदुल मैम से आपकी मुलाकात हो जाएगी. पहली बात तो आपका जो टाई जो है बहुत ही ज्यादा, नहीं, मेरे ख्याल से खड़े होने के बाद वो टाई बराबर देखिए बेल्ट तक आना चाहिए. ओके. टाई जो है बेल्ट तक आना, बैठने के बाद नहीं, खड़े होने के बाद. खड़े होने के बाद बस बेल्ट को टच करे, पूरा बेल्ट के नीचे नहीं जाए. ओके. बेल्ट को टच करे इतना टाई होना आप खड़े चाहिए. हो और टाई पिन नहीं नीचे और जा रहा है. ज्यादा नीचे जा रहा है, बैठे बैठे. हाँ, तो क्या होना चाहिए, वो जस्ट बेल्ट को टच हो जाए और वो मैच नहीं कर रहा उसके साथ टाई. ओके. तो ये ब्लू कलर है, क्या कलर है? हाँ, नेवी ब्लू थोड़ा. नेवी ब्लू है, ठीक है ना. सो ये टाई आपको लग रहा है कैसा Okay. लग रहा है? सो एक डार्क ब्लू कलर टाई में स्ट्रिप्स हो तो ज्यादा अच्छा हो, ठीक है ना. ओके. और शर्ट भी आप स्काई ब्लू कलर ले लो. शर्ट एक बार आप मैम से कल बात कर लो. हाँ, मैम बता दें. ओके. कल मैम से बात कर लो. टाइपिंग लगाना बहुत जरूरी है कि बैठते बैठते टाई इधर उधर चला गया तो आपको ध्यान में नहीं आएगा ना, आप तो बैठ चुके होंगे, सामने देख रहे होंगे, ठीक है ना. तो वो जब अंदर आते हैं तो इसे पहन के आना है, मतलब बटन बंद करके आना है. दो बटन का क्यों लिया आपने? वो लिया नहीं, वो सिया हुआ है तो सिलाया ना, तो उस वक्त सिंगल बटन का आपको किसी ने रिकमेंड नहीं किया है क्या? हमने स्पेसिफिकली उसको ऐसे बताया नहीं था, तो शायद उसने 2 बटन का बना दिया. नहीं, वो सिंगल बटन होता तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि टाइम लगता है. आपने देखा होगा, हाँ, आप आने वही. के बाद बैठने से पहले आपने 2 बटन खुलते खुलते बहुत ज्यादा टाइम लग गया. वही इसलिए. जरूरी नहीं आप दोनों हाथों से फटाफट खोल लीजिए उसको. ओके. हाँ, फटाफट, क्योंकि टाइम की कमी होती है एटलीस्ट वो शुरुआती दौर में जो होता है कि आप कितना एकदम सिंपली ये सब चीजें कर पाते हो. आप यूज्ड टू हो कि नहीं ये देखा जाता है इन सब कपड़ों में. ओके. थोड़ा सा डाल के रहिए कुछ समय ऐसे, कभी भी आप इंटरव्यू पे आते डाल के, ठीक है ना. और एक आध अगर आप ले सको तो फाइनेंशियली अगर पॉसिबल है तो आप एक और ले लो. ओके. हाँ, तो सेम ही सिला लो और वो उस दिन सिंगल बटन का ले लेना, ठीक है ना. मैम से एक बार बात कर लो. ओके. और कल दाढ़ी कर लेना, दाढ़ी निकाल लेना. अभी तो मतलब नागपुर में हूँ तो मैं मतलब नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप बार्बेरिया चले जाइए, है. ओके. आप चले जाइए यहाँ आसपास ही, मेरा नाम भी आप ले लीजिए, वो कर देंगे. आप मूंछ नहीं निकालना, बस ओनली दाढ़ी निकाल लेना, ठीक है. तो इंटरव्यू के टाइम पे फिर हाँ, पूरा क्लीन क्लीन शेव जाइए, पूरा क्लीन शेव जाइए, बहुत अच्छे लगेंगे आप उसमें, ठीक है. ओके. वो ज्यादा अच्छा रहेगा. जो टाई है वो शर्ट टाई थोड़ा सा उसके बारे में एक बार मृदुल मैडम से बात कीजिए, सही बात हो जाएगी. और ऊपर एक पेन चाहिए मुझे वहाँ, पेन. सिल्वर कलर पेन चाहिए. इंटरव्यू के टाइम पे भी. हाँ, नया घड़ी चाहिए, वॉच चाहिए, न्यू वॉच. शादी है आपकी. आपको समझ में आया? न्यू वॉच, न्यू शूज, सब नया चाहिए. ओके. ठीक है. अब समझिए प्लीज, इसका महत्व है. वहां तक पहुंचने के बाद छोटी सी चीज के लिए कोई चीज आपसे चली ना जाए इतनी बड़ी, ठीक है ना. एक छोटा सा एक मिस्टेक ऐसे ना हो, क्योंकि पैनल ये देखना चाहता है कि आपकी तैयारी कितनी तैयारी की है आपने, क्या आपने हर चीज की केयर की है, हमारे लिए कितना आप तैयार होके आए हैं. हमारे लिए मीन्स आरबीआई के लिए. आरबीआई के लिए आप ये समझिए, हमारे लिए नहीं, अपने आरबीआई के हिसाब से इस जॉब की कितना इसको महत्व आप देते हैं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है. समझ में आया? दिस इज द वे ओनली. तो हम लोग अभी क्या करते, प्लान करते, चॉकआउट करते. ये आपका एचआर राउंड हो गया, एचआर प्लस जनरलाइज राउंड हो गया. फिर हम लोग इसको सेग्रीगेशन करते हैं. तो सेग्रीगेशन आपको समझाया जाएगा. वैसे वैसे आप आइए, प्रेजेंट रहिए. तो हर दिन नया पैनल रहेगा, हर दिन नए लोग रहेंगे, और वो कभी मिक्स भी रहेंगे. फिर बड़े हॉल में भी लेंगे, ठीक है. बड़े हॉल में ज्यादा लोग भी रहेंगे, ठीक है. ऐसा करेंगे तो उसका एक अच्छा असर होगा. ओके. यस, बिल्कुल. कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. थैंक यू. Best of luck. बाय. बाय.